Hello, now let us start the panel discussion. And I would like to invite the expert panelists on the dais. First, Mr. Pranav Pathak, Director Venkatesh Buildcon. Mr. Pranav Pathak, please. Mr. Jayant Vaidya. Mr. Lalit Hirani. आइए सर इधर बैठे हैं Mr. Pragnesh Patel from Z Infra. Mr. Krunal Bhuta. Yes, Mr. Krunal, please. Mr. Purushottam Deshpande. And Mr. Sushil Deshmukh. I welcome everybody for this panel discussion. I hope it will be a very interesting debate. I would not say debate, but it is a discussion. We'll run through what has happened in the city of Mumbai for all these years, and then what is the status of the construction industry, what is the status of redevelopment process which is currently going on in full swing in the suburbs. So all that we'll understand from the veterans and the experts in the field. I would like to welcome all the dignitaries. And first, I would naturally start with Mr. Vaidya. Because Mr. Vaidya is a veteran in the industry, more than 40 years, 50 years experience. And he has been a president of PIATA, the Architects Association. And he has been an architect also, he has been a builder also. And as Mr. Parag, our MLA mentioned, हीच मराठीत एक हे आहे एक प्रोग्राम आहे कुटुंब रंगलं काव्यात तसं मला वाटतं यांचं कुटुंब रंगलं कन्स्ट्रक्शनमध्ये असं असं म्हणायला हरकत नाही. सो फर्स्ट आय वूड लाईक टू गो टू मिस्टर वैद्य अँड सर तुम्ही थोडंसं ना आम्हाला अगदी यू हॅव सीन द इंडस्ट्री ग्रोईंग फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स तर तुम्ही आम्हाला एक रन थ्रू देऊ शकाल का इंडस्ट्रीचा हाऊ इंडस्ट्री हॅज चेंज्ड अँड then then the redevelopment process and then redevelopment मधले थोडे hurdles and then what can be done अशा टाईपचं काही एक ओपनिंग कॉमेंट आपण म्हणूया तशी. Yeah, I have been in the industry for last 50 years. Yes. So we started basically practicing only as architects, and my firm is architectural firm is now 90 to 95 years old. So it will be in 1830, this 2030 it will be around 100 years now. So my father, my uncles, my wife, my son, my daughter, all are architects. From 79 we have started development. But what I see from past 50 years, when we started our practice, there were plenty of vacant plots in Mumbai, all around, in the suburbs. Suburbs were empty. There were plenty of plots within the city also. And there was nothing like a redevelopment mode per se anywhere. All that as a developer when I started in 79, all that we had to go in for was for purchase of a plot. And for purchasing the plot, all that you needed to do was to meet the landowner, try to talk with the landowners, get the insight, talk to him about the price. If the price was settled, then payment terms were settled. And if it was on per se on deferred payments, and if that deferred payment worked up, we were able to get the plot and get into development mode. When we started, when I started, the construction rate in the initial stages was 19 rupees a square foot. Further down the lines, it went to 25, 35, 45 rupees a square foot. And then when somebody said this construction rate has been quoted as 35 rupees a square foot, we used to say, उसको त्याला बाजूला काढा. ह्याचं काय काम नाही आहे. हे साधारण 4-5 रुपये तरी कमी केले पाहिजे. That was the position in Mumbai at that time. What was the year? That was in the range of around 75. Oh. 50 years. 50 years. In
Parla Andheri near Jambo Darshan and all those societies, flats were sold at 130 rupees a square feet. So that was what was available at that time. And flats were available. Like if I wanted to sell my flats, माझ्या बिल्डिंगमध्ये 10 फ्लॅट आहेत. तर सर तुम्ही फ्लॅट घेणार का? I used to run from place to place. Some broker used to come and tell, this gentleman wants a flat. And I used to go to his house in the night. Ki, sir, you have wanted to sell the flat, buy a flat. Would you like to see this plan? And that's it. Plans were sanctioned in the corporation. And once the IOD was sanctioned, I was able to sell the flats without any construction being done. People were ready to buy the flats also. That was also there. To my credit, I think today we are saying that each approval, you will agree with me, it takes around 4 to 6 months to get an IOD minimum. I, in around 78 or 79, have submitted a plans for approval at Kandivali municipality in the morning. Next morning, I had the IOD in my hand. Less than 24 hours, and actually it was signed on the same day, but the executive engineer refused to हँड मी ओवर द कॉपी. तू सकाळी सबमिट केलंस ना? मी म्हटलं हो सर. म्हणजे IOD झाली पण? म्हटलं झाली सर. काय प्रॉब्लेम नाही, हे नाही ते नाही, कन्सेशन एव्हरीथिंग इज अप्रूव्ड. मी आज संध्याकाळी तुला देणार नाही, उद्या सकाळी 10:30ला ये आणि घेऊन जा. अँड दॅट वी गॉट इट इन 24 hours. That is what was used to happen at that time. Secondly, I also worked as the association with the Architects Association from 1988. Till 2015, I was very much in active. This 1999 to 2001, I was the president of PIATA. What I found in those days was, as a executive committee member or as a president later on, we had our own problems. We used to work out our own problems in the association. And once that was done, we used to take them to the executive engineer, deputy chief engineer, or director or municipal commissioner. But each and every table, I found that the person on the other side was ready to listen to my views. My views were automatically only for the sake of the entire fraternity per se. But we had 20 points and they used to tell me, ki, these 20 points, okay, we will take them up and all that. But that gentleman on the other side, when even my views were diametrically opposite to him, he used to listen to me. That was the issue. Today there is no discussion whatsoever, if you will agree with me. There is no discussion, nothing. You place it on the, everything is online, agreed, but there is no discussion. I have got my own views, you have got your own views. I might be violating something, might be reasons, but that has gone. But previously also it was like this, ki plots were available, people used to come together. Bank of Indiaची सोसायटी झालेली आहे. आम्ही 19 मेंबर तयार झालेलो. अजून 5-6 होत आहेत का बघा. आता now can we develop it? That was the procedure then. Or that was what used to happen, which is out of question. Today you don't have a single plot. If I find a single plot today, which is lying vacant, and which I find that it is available for sale, then I have to think 100 times, there is something fishy about this plot. There is some litigation, there is something that is unknown to me. I have to dig deep, very deep into that, dig into that and find out. And I find that there is a lacuna somewhere. Somebody has claimed it somewhere. Again in 1985 onwards or 86 onwards, there was a plenty of problem of Gundaism, where people used to come with swords and pistols, and we have faced them personally also. And police protection was limited or not there. I shouldn't speak on that, but still there was a limitation to everything. But that was another very horrible period, that to go on the site itself used to be terrifying. उद्या तुम्ही साईटवर आला तर संध्याकाळी राडा होणार तुमच्या ऑफिसला. That was the language that I have seen, faced, heard,
including swords and choppers, which I have personally encountered. From 88 or to end of 99 or something like that. Later on, it has now subsided. But sometimes I feel, sir, that there are two kinds of terrorisms, as I know, whichever I have seen. One is with the knife, and other is with the pen. And the pen is more dangerous. That's all I can say. थँक यू फॉर युअर ओपनिंग कॉमेंट. सर एक दोन प्रश्न मला त्याच्यातून विचारा असे वाटतात तुम्हाला की तुम्ही आता आय म्हणा 24 तासात मिळालं किंवा आपण फ्युचर होम्स विषयी बोलतोय तर हा प्रश्न ॲक्च्युली इट्स फॉर एव्हरीबडी. वी टॉक अबाउट फ्युचर होम्स, वी टॉक अबाउट AI being introduced in management of homes, and I was mentioning that in the opening comment. So, how far it is done at the administration level? How far automation is there? How far अथर्व तुम्ही सांगा. आपण सगळं आता हळूहळू काय म्हणतो ऑटोमेशनला सरावलेलो आहोत, आपण सर्व मॉडर्न लाईफस्टाईलला सरावलेलो आहोत, पण आपलं ॲडमिनिस्ट्रेशन किती मॉडर्न झालं? So, What is your experience? first of all, on behalf of Atharva, thank you for inviting us on this platform. And it's privilege to share dais with such a senior stalwarts and my fellow brothers. We are all thrilled. Thank you very much. ये बहुत एक important question है, like about AI, what you are saying. एक तो है ना, इनके बाद कुछ बोलना मतलब जयंत सर के बाद it's very difficult. उन्होंने बहुत एक 15 मिनट में he has carried us from like start to this. So it's he has given a picture that what construction industry is all about. Absolutely. But yeah, definitely AI is very important and I think it's a boon to the industry. Like for example, nowadays, जैसे कि हमको कुछ even letters बनाने हैं, even like for the DA, for example, if I want to do a development agreement or power of attorney, what we used to do, we used to type and we ask ChatGPT, just check. So उनकी language इतनी अच्छी है कि even not the solicitors match those things. So it's not like they can be a good alternative. It cannot be a main system, but it can be an alternative system. So speed will be there. So AI homes definitely health. See, आजकल है ना, homes is not the only homes. Health is the important factor. So they always say that your home should be having the rating of what is your health, like what kind of air you are having inhaling. मतलब आज इतने advanced हो चुके हैं. I was speaking to an architect. He said that in Dubai we are making homes where once you enter the bathroom, your complete body is scanned and they will give your every statistics. What is your BP? What is your pulse rate? Everything. If you are entering in a room, the oxygen level, what is required, they will switch the system like that. So this is the need of an hour because we understand with the pollutions, with the industry growing the way it's going on, it's going to be there, it's going to be part. And people are worried that humko job chala jayega. It's not like that. See, we have to be part of the process. I think sir has seen the era where there was no computers. मुझे पता है हम लोग फाइल हाथ से मतलब we used to sign and used to submit the files, backdated भी होता था. Now the auto DCR has come, which is good actually. But has it really come in the administration? Yeah. Absolutely. Yeah. So in future, I think the process will be so crisp and clear that you submit your plans. AI will suggest. See, not in humans. There can be a human error, but AI will not do that errors. Okay. So if taken in a positive sense, it's going to be a good thing for the industry. But rightly said, when he said that दो तरह के terrorism है, एक है knife है, एक है pen है. तो हमारे इंडिया में अभी पेन का terrorism बहुत ज़्यादा है. Today also, if after auto DCR, there are systems where we have to go to meet an officer, we have to explain him, and then the file is cleared. Yeah. So ये अगर officers या ये see these officers are all like IS. What I'm talking is about IS officers or something who are so at a senior level. If they think that we want to implement that, then only it's going to be done. With as an industry, as a developer, and as an architect, we always want a clear and smoother functioning in the department. But from their side, it's like so much of resistance. For example, जैसे इन्होंने बताया कि मुझे अगर कोई clear plot मिलता है ना तो title मुझे देखना पड़ेगा. तो when I say that if I am giving a money for a plot, there should be a one window system from the government that they should give me the title that this plot is clear. For example, अभी जैसे अगर हम लोग एक property लेंगे तो we require property card, DP remarks, TP remarks, title search.
So there is no one window system. We are made to run to four different departments. Then we have to collect all the records and we have to give the certificate. So I want government should take a stand that you go here, you will get the certificate, this property is clear, so that kind of support we require from the governance. If these things happen, then definitely this industry can do. I mean, see, talent-wise in India, there is a lot of talent. If you, I've been to Dubai, I've been to Singapore. The construction workers are from Indians, so they know how to construct. See, brains are there, but we are not getting the support from the governments. We are not getting support from the higher authorities. So I think that is the place. I think AI will definitely play a role if it's taken in a positive sense. Thank you. Add one more line to what you said. You said one window clearance. That's now government has come up with this for self-development proposals. There will be a one window system, and the file will be cleared in a this of record time of 2 months or 3 months or something like that. I would like to ask the government why only for Hello. societies. One window system should be there for everybody. Whether if I am working as a builder, if I am working as a developer, then why that system should not be extended to me? It should be extended to every citizen or everybody practicing in this profession. Yeah, I would. Yeah, please. Point to this. Exactly what he said, एक ही area में there is a SRA scheme, there is a MHADA scheme, and there is a BMC. The rules are different. The next door building will be getting more concessions. The next door building will be not getting the concessions. So why there should be one standard format which I feel should be for everyone. Why society should not get the benefits and why SRA are getting the benefits? The taxpayers are not getting the benefits. Those who are not paying the taxes, they are getting the benefits. So this question has to be raised because of the vote banks. They are doing these things, which is not correct actually. Mr. Krunal, what do you think? Hello everyone. I'm representing Arcade. It is a pleasure to have all the seniors in the dais. As far as the redevelopment and the activities which we are looking for, there should be a one window system as the seniors have already represented. But yes, there should not be any kind of differences between the SRA scheme, the MHADA scheme, the layout schemes. There are many layouts which yet are not been cleared by, or there are lot many ambiguities in the same. The clearance process and the legal aspects should be addressed or should have an interferences by the government department, so that a very clear title for the societies, for the layouts, as well as the land parcel should have into place. This is one of the point. The second point would be wherein we can have a clearance system with the latest technology into place, so that it should be a hassle-free approval process wherein a society member or an individual who has just a basic knowledge about the computers can have fully access. The citizen search is already there in place. But yes, the MHADA as well as the SRA is yet to be getting things updated in the process. If the same has been done, then it would be a very clear process which can be addressed by the government. Yeah. Yeah, thank you, Mr. Krunal. Mr. Patel? Yes. Yeah. What has been your experience and how you are implementing or introducing AI in your systems? Yes, thank you. Maybe First that of all, will be interesting. thanks for everyone who given the platform and invite to us for this Gruh Mahotsav. Thanks again. See, basically, Zinfra Group is having last 15 years we have completed in this field. And in this 15 years, 14 to 15 projects completed and 5 in pipelines and 5 in ongoings. Is there 20 buildings are there? And in 20 buildings, approximately 750 families joined with us and were delivered to nice home, good home to them. And basically जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं
स्टार्ट से लेके एंड तक 2 इयर्स 3 इयर्स का जो पीरियड होता है वो जर्नी, लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि बस हमने ये घर लिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मुझे चाबी मिल गई। पिक्चर में उनको उतना ही दिखता है, बट जो पिक्चर के पीछे का जो सीन है, जो एक डेवलपर को इतने सारे उतार चढ़ाव और सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे वैद्य सर ने बोला, उन्होंने एकदम ओपनली बोल दिया कि क्या क्या उनके साथ हुआ है, वैसा ही है आज भी। बट फेसिंग बहुत सारा चैलेंजेस बहुत है, बट हम जो डेवलपर्स है वो उसको शो नहीं करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को या हमारे लोगों को हम ये सब नहीं बताते हैं कि मुझे ये बनाने में क्या तकलीफ होती है, क्या होती है। वो हमारा लुकआउट है, हम इस बिज़नेस में आए, इस फील्ड में आए, तो वो मेरा पार्ट एंड पार्सल है, मेरा रोल है। बट मुझे क्या डिलीवरी करना है, हमारा एम वही रहता है कि मुझे क्या डिलीवरी करना है, लोगों को सस्ता और अच्छा घर कैसे देना है। हम उसी के ऊपर हमारी कंपनी भी वर्क करती है और उसी को हम फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत है। अभी हम ये सब प्रॉब्लम अगर लोगों को बोलने जाएंगे तो बोलते आप इस फील्ड में क्यों आए, आप खेती करो, इट्स गुड, एकदम फ्रीली दोपहर को 3 घंटा सो जाओ और रिलैक्स करो, कोई पूछेगा नहीं, कैसे भी कपड़े पहन के घूमो, ठीक है ना। ठीक है, तो एक जोक है, बट प्रॉब्लम्स बहुत है। और जैसे भी एआई का ज़माना आया है, आपको अपडेट अपने आप को, आपकी टीम को और आपकी पूरी सिस्टम्स को करना पड़ेगा। पहले हम तो ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट अपडेट होवे या देने से पहले हम अपने आप को खुद को अपडेट कर लेते हैं कि वी आर रेडी कि नहीं, हम रेडी होने चाहिए। पहले अपना गट्स बोलना चाहिए कि भाई हमें ऐसा ही करना है, तो ऑटोमेटिकली फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपको उसके साथ मैच होना पड़ेगा। अभी मेरी यूएस में भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जैसे अभी ललित जी ने बोला सिंगल विंडो में सब काम होना चाहिए। आज यूएस में इतना अच्छा प्रॉपर सिस्टमेटिक है, आपको एक ऐसा बोलोगे कि आप अभय जी अगर चले जाते उदय जी के वहाँ पे मुझे बिल्डिंग बनाना है, तो इजीली वो बिल्डिंग बनाएंगे। कुछ भी टेक्निकल कुछ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिस्टम फॉलो करो, आप जाओ, सिंगल विंडो ही है वहाँ पे, सारी एनओसी एक ही जगह पे मिलेगी। इवन प्लान भी अभी वो लोग भी रेडी करके देने का सिस्टम आ गया है उधर। आप आपके आर्किटेक्ट को भले रखो, बट अगर आप गवर्नमेंट से प्लान मांगते हो हाउ टू बिल्ड एंड विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, तो वो लोग स्टैंडर्ड मैटर आपको वहाँ से भी मिल जाता है और पूरा इजीली हो जाता है। वो सिस्टम अगर अपन सब कुछ ट्रम्प का फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी एक ट्रम्प की सिस्टम अपने को, अपने कंट्री को और अपने यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी उसको फॉलो करना चाहिए और उसको सिस्टम में डालना चाहिए। तो एकदम इजीली अच्छा प्रोडक्ट बनेगा और अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू सर, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अभी क्या है, वी हैव some we have as you know we have exhibitors from outside Mumbai also. So till now we have discussed the issues, we have discussed the problems or maybe the systems which are related basically to Mumbai. But now we have people from outside Mumbai also. We have exhibitors from Nashik, we have exhibitors from Pune. So we have with us Mr. Pathak, who is representing Venkatesh Buildcon. We have with us Mr. Purushottam Deshpande, who is representing Deshpande Constructions. So I would like to ask them, are the systems or are the problems similar in Mumbai and Pune? Number one, are you facing the same issues, same problems? And then what exactly you are here for? वो भी आप बताएं थोड़ा, कि ये हमारे लोग तो है ही, आर्किड वाले हैं, जी वाले हैं, या अपने अथर्व वाले हैं, वैद्य साहब है, लेकिन आप लोग भी यहाँ आए हुए इतने दूर से, आप क्यों आए भाई, वो भी बताइए हमको. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल अस वेदर द इश्यूज इन मुंबई एंड इश्यूज इन पुणे आर सिमिलर. We also are curious to know whether you are going to the same ordeal or you are somewhat better or what. Please, after that you will also speak. So good afternoon. So I'm Pranav. I'm representing Venkatesh Buildcon. सर म्हणजे मी सांगायचं तर मी जास्त मुंबईचा आहे. म्हणजे माझं BMC कनेक्शन खूप फारच जुनं आहे. म्हणजे माझे बाबा आणि वैद्यसाहेब हे आय थिंक 20-25 वर्ष मित्र आहेत. सो त्यामुळे माझे बाबा ही रिटायर्ड ॲज अ हायड्रॉलिक इंजिनियर फ्रॉम म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन. सो व्यंकटेश बिल्डकॉन ही कंपनी आम्ही पुण्यात जवळपास एक 75 लाख फूट काम झालेलं आहे. आत्ता सध्या एक 80 लाख फूट काम चालू आहे. इथे येण्याचं कारण असं की आम्ही आता मुंबईत एंट्री केली आहेत. मुंबईत आता आम्ही मुलुंडला एक डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट साईन झालं आहे. 5000 स्क्वेअर मीटरचा प्लॉट आहे आणि प्लस एक अराऊंड अजून एक 35 ते 40 लाख फुटाची कामं मुंबईत
पुढच्या 6 महिन्यात चालू होतील. सो दॅट इज वाय वी आर हिअर की टू अंडरस्टँड मुंबईचा रिअल इस्टेट मार्केट, मुंबईचे अप्रुव्हल्स, मुंबईचे इश्यूज हे सगळ्यांनी डेपिक्ट केले. सो त्याच्यात माझा एकच वन पॉईंट होता की आपल्याकडे एक जसं मगाशी आळवणी साहेब हे म्हणाले की 33-7 जो आहे हा सबब्स करता खूप स्ट्रॉंग होणं गरजेचं आहे. त्याच्या आधी ते होत नाही तोपर्यंत रिडेव्हलपमेंट ऑफ सोसायटीज करता आपल्याला तुम्ही 7B जा, मग 7B+20B करा, 7B+12B करा, किंवा म्हाडाला जा किंवा क्लस्टरला जा. हे तुम्हाला सारखं प्रत्येक डेव्हलपरला म्हणजे एका प्रोजेक्ट करता 4 डेव्हलपरनी 4 वेगळे आर्किटेक्ट घेतलं तर तुम्हाला 4 वेगळी वर्किंग मिळतात. सो त्यामुळे जी ही इनकन्सिस्टन्सी आहे त्याच्यामुळे एक फेअर ऑफरच डेव्हलपर देऊ शकत नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे देर इज दॅट चॅलेंज दॅट हॅपन्स इन मुंबई. दुसरं एक आहे की आपण फक्त बिल्डिंग प्रपोजल ऑनलाईन केलं ऑटो DCRवर, पण तरी तुम्हाला HENOCला वेगळीकडे जा, तुमच्या असेसमेंटला वेगळीकडे जा. सो इफ थ्रू AI ऑल ऑफ दीज कॅन बी इंटिग्रेटेड, दॅट इज समथिंग दॅट इज अ मच बेटर सिनॅरिओ जो आपल्याला MCGM करता लागेल. आता पुण्यात जर आपण बघितलं तर पुण्यात सिस्टीम ही एवढी ऑनलाईन नाही आहे आणि पुण्यातनं अप्रुव्हल्सचे स्टेजेसही एवढे नाही आहेत. म्हणजे आपल्याकडे पहिले आपण CFNOC घेतो, पार्किंग घेतो, कन्सेशन्स घेतो, मग IOD घेतो, मग CC घेतो, मग प्लिन CC, नंतर मग फर्दर CC घेतो. तिथे फक्त तुम्हाला डायरेक्ट एकतर इंटिमेशन ऑफ डिसअप्रुव्हल नसतं. हे आपल्या ब्रिटिश काळीने, त्यामुळे इंटिमेशन ऑफ डिसअप्रुव्हल इज समथिंग विच इज युनिक टू मुंबई. सो एव्हरीवेअर एल्स देर इज अन इंटिमेशन ऑफ अप्रुव्हल. सो तुम्हाला IOA मिळतं आणि कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट होतं. दुसरं, पुण्यात एक म्हणजे जे इन्स्टॉलमेंट स्कीम जी मुंबईत आलेली विच हेल्प्ड अ लॉट ऑफ रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स की ज्यांनी बाबा की 10% भरा, मग 22.5 असं करून 4 वर्षात प्रीमियम भरा. पुण्यात त्यांनी सिस्टीम केली आहे की 20% भरा आणि 80% डायरेक्ट OCला भरा विथ इंटरेस्ट, कारण OCला तुम्ही परत येणारच आहात तिथे. सो विच इज अ गुड स्कीम रॅदर दॅन की दरवर्षी, कारण इथे आता 8.5% 12% केले आपल्याकडे BMCनी तुमच्या प्रीमियम्सचं. पण त्याच्यात विषय होता की कारण डेव्हलपर्स कधी कधी नाही मीट करू शकत त्या ज्या डेडलाईन्स आहेत. सो पुण्यात ती एक स्कीम खूप चांगली आहे. पुण्यात क्लिअरन्सेसच्या एवढे टेबल्स नाही आहेत. म्हणजे आपल्याला कन्सेशनला 6-5 टेबल आहेत, म्हणजे सब इंजिनियर टू, मग परत DP मधले 4, मग कमिशनर, मग त्याच्यानंतर IOD, मग TDR. त्याच्यात तुमच्याकडे प्रत्येकाला 3-3च हे आहेत. आणि त्यांच्या इथे जो सिटी इंजिनियर आहे, ही इज द फायनल अथॉरिटी. सिटी इंजिनियर इज द फायनल अथॉरिटी टू सँक्शन द प्लॅन. म्हणजे जसे आपल्याकडे चीफ इंजिनियर प्रत्येक ह्याचे आहेत म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनला, म्हणजे DPचा वेगळा आहे, हायड्रॉलिक इंजिनियर वेगळा आहे, तुमचा SPचा वेगळा आहे, रोड्सचा वेगळा आहे. तिथे एक CE आहे, दॅट तो कमिशनरपर्यंत जातच नाहीत जास्त गोष्टी, तुमच्या CE लेवललाच सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतात आणि त्यामुळे अप्रुव्हल्स आर अ लॉट फास्टर. ही चांगली गोष्ट सांगितली. म्हणजे नाही, टेक्निकली आपल्याकडे जास्त प्रोसेसेस आहेत. पुढे गेलं आपल्यापेक्षा. नाही, पुढे नाही आहे, पण आपल्याकडे पहिल्यापासूनच प्रोसेसेस जास्त आहेत. कारण काय आहे की जो मुंबईत जे कमिशनरच्या डिस्क्रिशनरी पॉवर्स आहेत, जे आपल्याला TDR, ओपन स्पेस ते कंडोन करायला मिळतात, त्या बाकीच्या सिटीजमध्ये नाही आहेत. म्हणजे पुण्यात जर तुमच्याकडे 1 एकरचा खालचा प्लॉट असेल ना, तर तुम्ही पोडियम बांधूच शकत नाही, कारण तुम्हाला पोडियमच्या पुढे पण 6 मीटर सोडायला, जे आपल्याकडे 1.5 मीटरवर पोडियम करता येतं. सो त्यामुळे ती रिस्ट्रिक्शन्स आहेत. कारण मुंबई ऑब्व्हियसली आपल्याला व्हर्टिकल जायला लागतं, त्यामुळे देर इज अ लॉट मोर कन्सेशन्स दॅट आपल्याला लागतात. तर बाकीच्या सिटीजमध्ये कन्सेशन्स नसल्यामुळे अप्रुव्हल्स फास्टर आहेत. आपल्या इथे जे चॅलेंजेस आपण सगळ्यांना म्हणतो, दोज चॅलेंजेस आर बिकॉज ऑफ द कन्सेशन्स. जर ऑटो DCR प्रमाणे जो प्लॅन आहे जसा पाहिजे तसा प्रत्येकाने पाठवला तर तुम्हाला एवढे जे व्हेरिएशन्स येतात ते येणार नाहीत. तुम्ही आता दोन्हीकडचं बघितलं नाही का, मुंबई बघितलं, पुणा पण बघितलंय. लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. इज देअर समथिंग विच मुंबई म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन ॲडमिनिस्ट्रेशन कॅन टेक फ्रॉम पुणे? नो, मुंबई म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनमध्ये एकच गोष्ट आहे जी सर जास्त हे करतील, की जी कमिशनरची डिस्क्रिशनरी पॉवर आहे, त्याच्यामुळे आपल्याकडे अप्रुव्हल्सला जास्त वेळ लागतो आणि जास्त स्टेजेस आहेत, प्रोसिजर जास्त आहेत. कारण मुंबई इज द ओनली सिटी जिथे ते आहे. बाकी ठिकाणी तुमच्याकडे तेवढ्या अप्रुव्हल्स नाही आहेत. बाकी तुम्ही जे आता नवीन UDCPR आला आहे 2019 मध्ये, त्याच्यानंतर त्यांच्या गाईडलाईन सेट आहेत.
देर इज नो कन्सेशन एनिवेअर. मुंबई इज द ओनली सिटी वेअर देर इज कन्सेशन. मी आय थिंक सर जास्त वैद्य सर जास्त इलॅबोरेट करतील. त्यामुळे तुम्हाला थोडं अप्रुव्हल्सला जास्त वेळ लागतो. ठीक आहे. थँक्यू मिस्टर वाटर. आय विल कम टू यू मिस्टर वैद्य, बट बिफोर दॅट आय वुड लाईक टू आस्क मिस्टर देशपांडे. He has come from Nasik. So first of all, tell us whether there is any difference between the procedural process in Nasik and Mumbai and Pune. Now you have got the thing from Pune also. So let me know. Working in Pune also. अच्छा, तर तुम्ही सांगा पुणे, मुंबई, नाशिक, हाऊ डू यू कम्पेअर, आणि तुम्ही इथे येण्याचं मेन कारण काय ते पण सांगा. नमस्कार, मी पुरुषोत्तम देशपांडे कन्स्ट्रक्शन्स अँड लँड डेव्हलपर्स. तुम्ही इथे आम्हाला प्लॅटफॉर्म शेअर करायला बोलवलं त्याच्याबद्दल धन्यवाद. खरं आता वैद्य साहेबांचा जेवढा एक्सपिरियन्स आहे तेवढं माझं वय पण नाही आहे. तर मुंबईबद्दल मी जे काही आहे म्हणजे थोडं मुंबईच्या प्रोसिजर्स मला कमी माहिती आहेत. आम्ही नाशिक आणि पुण्यामध्ये काम करतो. मुंबईमध्ये तुम्हाला IOD घ्यावी लागते. IOD माझ्या माहितीप्रमाणे फुल पोटेन्शियल तुम्ही किती बांधू शकता हे तुम्हाला सँक्शन करावं लागतं. आम्ही नाशिकमध्ये वन स्ट्रोक सगळा प्लॅन सँक्शन करू शकतो. आम्हाला बेसिक FSI मिळतो, त्याच्यानंतर प्रीमियम मिळतो जो कॉर्पोरेशन देत असतं, आणि TDR मिळतो. दॅट्स इट. आम्ही पूर्ण प्लॉटचं हे एका वेळेस सँक्शन करू शकतो. पुण्यामध्ये गेलं तर पुण्यामध्ये हे 2 वेळा सँक्शन करावं लागतं. पुण्यामध्ये पाठकसाहेब माझ्या माहितीप्रमाणे पुण्यामध्ये पहिल्यांदा आपल्याला बेसिक FSI आणि प्रीमियम एवढ्यावरच आपण करू शकतो. नंतर आपल्याला TDR घ्यावा लागतो. आम्हाला नाशिकला प्रोसिजर्स तशा सोप्या आहेत. पुण्या एवढंसुद्धा कॉम्प्लिकेशन्स नाही आहेत. पुण्यामध्ये वेगवेगळे क्लिअरन्सेस असतात, इलेव्हेशन सर्टिफिकेट आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पुण्यामध्ये ज्या कराव्या लागतात त्या नाशिकमध्ये आम्हाला तसं नाही करावं लागत. फक्त आम्हाला नाशिकमध्ये काय करावं लागतं, काही अप्रुव्हल्स ही NAची आहेत आणि बाकीची आहेत, प्लॉट अमलगमेशन आणि डिव्हिजनचे आहेत, या सगळ्या कलेक्टर ऑफिसमधून घ्याव्या लागतात. तर तो जो क्रिकेटचा गेम आहे, बॉल इकडून तिकडे तर तो खेळत असतो. दुसरा ऑटो DCRचा जो मगाशी विषय मांडला, तर ऑटो DCR पण आता नाशिक कॉर्पोरेशनने इम्प्लिमेंट केलेला आहे. पण त्याच्यात खूप हर्डल्स आहेत, खूप स्लो प्रोसेस होत असते त्याच्यामध्ये. शेवटी पुण्यामध्ये काय करतात की PDF फाईल फक्त मॅन्युअली चेक करायची पॅरलली, आणि शेवटची PDF फाईल सबमिट करायची आणि ते अप्रूव्ह द्यायचं. आम्ही नाशिकला अजून तसं करत नाही आहे. तर नाशिकला थोडा आम्हाला अप्रूव्हलला ऑटो DCRमुळे वेळ लागतो. पण नाशिकला आमचं काम तसं पुण्यापेक्षा बऱ्यापैकी इझी आहे. आता तुमचा दुसरा प्रश्न, आमचं इथे येण्याचं कारण काय. तर नाशिक बेसिकली फॉर सेकंड होम फॉर मुंबईकर्स. तर तो सेकंड होमचा दृष्टिकोनातून आम्ही इथे आलेलो आहोत. आमचे नाशिकमध्ये आता एक जवळपास 750-800 फ्लॅट्स चालू असतील. मागच्या एक 20 ते 22 वर्षात आम्ही 3,500-4,000 फ्लॅट्स नाशिकमध्ये डिलिव्हर केलेले आहेत. आणि मला तुम्हाला सांगायला एक आनंद होतो की एवढ्या कुठल्याही फ्लॅट्समध्ये आमच्या आजपर्यंत सिंगल कन्झ्युमर केस आमच्यावरची नाही आहे. क्लिअर टायटल, पूर्ण कंप्लिशन देणे आणि लोकांना सेल्डेड करून देणे आणि शांत झोपणे, ही आम्ही ट्रान्सपरंट प्रॅक्टिस करतो नाशिकमध्ये. गुड, चांगली गोष्ट. आणि ऑफकोर्स बरेच पार्ल्यातले किंवा मी बघतो ना पार्ल्यातले मुंबईतले सेकंड होमसाठी बरेच उत्सुक असतात लोक. आम्ही बेसिकली आमचे सगळे मोठे प्रोजेक्ट्स आहेत ते पंचवटी भागामध्ये आहेत. हां, पंचवटी भागामध्ये आहेत, जिथून रामकुंड आणि नदी जवळ आहे. आमचा एक रामचंद्रनगर म्हणून प्रोजेक्ट आहे. आम्ही त्याच्यात रामाचं मंदिर देखील बांधलेलं आहे छान. एक साधारण आमच्याकडे स्केल आहे ना, ही पंचवटी, आडगाव हे सगळे पंचवटीचा भाग येतो. याच्यात साधारण एक 200 फ्लॅटच्या आसपासचा एक प्रोजेक्ट आहे. अशाप्रमाणेचे प्रोजेक्ट नाशिकमध्ये आता होत आहेत. आणि त्याचबरोबर आम्ही प्रीमियम लोकेशन्सला पण काम करतो. लाईक गंगापूर रोड, कॉलेज रोड हे नाशिकचे प्रीमियम लोकेशन्स आहेत. तर यालाही आमचे म्हणजे प्रोजेक्ट्स चालू आहेत. साधारण 20 लाखापासून 3.5 कोटी रुपयाच्या फ्लॅटपर्यंत आम्ही नाशिकमध्ये काम करतो. चांगलं, वेलकम अँड ऑल द बेस्ट. तर मला एक सर, मगाशी तुम्ही म्हणालात चॉपर आणि हे सगळं पण तुम्ही ते दिवस बघितलेले, पण एक आम्हाला एक सामान्य माणसाच्या दृष्टीने आता गेले ना ते, आता काही तसा प्रश्न नाही ना आता. हां, कारण
एकेकाळी म्हणतात गँग वॉर आणि मग सगळं याच्यात सॉफ्ट टार्गेट म्हणजे बिल्डर असं आपण सगळेजण ऐकायचो. पण आता वैद्य सर सांगतायत आणि काय तुमचं पण हिराणी तुमचं पण हेच मत आहे. काही नाही आता काही नाही अभी एक ही है म्हणजे नहीं अभी एक ही जन चौपर चला गया तो पेन पावर हो गया अभी एक ही जन सब उसका कवर अप कर नहीं नहीं पहले बोलते थे सर कि जिसको डेवलपर होना है उसको डेवलपर होना है उसको पहले गुंडा होना पड़ेगा उसके बाद ही डेवलपर हो सकता है. लेकिन अभी ऐसा नहीं है, उसको गुंडा नहीं होना पड़ेगा, उसको गुंडे रखने पड़ेंगे उसकी सेफ्टी के लिए. वो एक था टाइम, बट वो मैनेज हो जाता था. ठीक है ना, आपको पे करके आपके साथ आप आपके लोग सब रख सकते थे. बट ये जो पेन वाला जो बोल रहे हैं ना सर, वो बहुत डेंजर है. मिस पेन कैसे चलेगी वो पता नहीं है. वो स्ट्रेट चलती है तो तब तक डर नहीं लगता है कि छोटा सा फिगर आ जाएगा कुछ भी. पर वो राइट लेफ्ट आड़ा टेढ़ा सब चलता है, बाद में उसको टोटल करते हैं तो कुछ और ही फिगर आ जाता है. फिर हम जब सोचते हैं, गवर्नमेंट भी बोलती है कि अच्छा घर बनाओ, सस्ता घर दो, लेने वाले हमारे जो कस्टमर्स है जिनको पार्लेकर को अच्छा और सस्ता घर मिलना चाहिए, तो घर अच्छा और सस्ता चाहिए तो जो ये कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से जो है वहाँ भी हेल्प मिलना चाहिए ना डेवलपर को. डेवलपर कहाँ भी कुछ कट नहीं कर सकता है, स्टील में, सीमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, लुक वाइज. आज अथर्वा का बिल्डिंग देखो आप कितना अच्छा दिखता है, वो फैंसी बिल्डिंग बनाते हैं. तो वो सब चीज़ के पीछे कुछ उनको एफर्ट तो लगता है ना, खर्चा लगता है. आज मैं एक सिंपल बिल्डिंग बनाता हूँ तो मेरे को समझो 40,000 में बनता होगा, तो उनको वही बिल्डिंग 45, 43 में बनता है. तो उसको जो एफर्ट्स और एक्स्ट्रा कॉस्ट डालते हैं तो रिटर्न भी आना चाहिए. तो जब कस्टमर को अच्छा देना है उसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ का कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि कस्टमर को तो सब कुछ चाहिए. ठीक है, तो जहाँ से अननेसेसरी पैसा जा रहा है, जिसको वो चीज़ चार्ज करने का राइट्स भी नहीं है. आप ऑफिशियली सब कुछ करते हो, आप ऑनलाइन फाइल डालते हो, ऑनलाइन फाइल को ऑनलाइन ही फाइल अप्रूव होकर आना चाहिए ना. फिर वो फाइल स्टक क्यों होती है? आपसे 10 परमिशन मांगा गया है, 10 चीज़ मांगा गया, आप सब कुछ देते हो और आपका आर्किटेक्ट ही उसको रिप्रेजेंटेट करता है सब कुछ प्रॉपरली. उसके बाद भी आपको फिर इस जो पेन वाला मैटर आना नहीं चाहिए. वो गुड लक के हिसाब से आप कुछ बोलो तो अलग होता है कि भाई एक अच्छा से ट्रॉफी बना के बड़ा सा देते हैं हम, तो उसमें खुश होना चाहिए आदमी. फूल का बुके लेके या बुक लेके खुश होना चाहिए. तो वो सब की कुछ वैल्यू ही नहीं है. जब तक आप वहाँ नहीं जाते हो तब तक आपका आगे नहीं होता. और वो बहुत यूज अमाउंट हो गया है, तो पब्लिक को भी ये पता चलना चाहिए कि अननेसेसरी आप जो चीज़ परचेस कर रहे हो उसके अंदर एक ऐसा अमाउंट भी, फालतू का अमाउंट भी है जो आपको पे करना पड़ रहा है. क्योंकि डेवलपर अपने घर से तो डालता नहीं है, सब कुछ उसके ऊपर ही चढ़ा देता है. 500 रुपया फुट पे अगर मैं आपसे ज़्यादा लेता हूँ तो उनके नाम से ले रहा हूँ, इतना आप समझ जाना सब. But thank you. Over the years, we have seen that the industry has become slightly better organized. जैसे वैद्य साहब जो बोल रहे थे 50 साल पहले ऐसा. Sir, I would like to highlight this. See, challenges are going to be there in the industries. पहले के challenges अलग थे, अभी के challenges ज़्यादा tougher हो गए. Tougher in the sense, I'll tell you why, step by step. जैसे एक सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाता है. सी हमारे डायरेक्टर सचिन गुंजाल जी बोलते हैं कि ये जो पैसा है ना, जो सिस्टम में पैसा आ रहा है, जो आप परचेजर से ले रहे हो, यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट मनी, यू आर द ट्रस्टी ऑफ दैट मनी. सो यू हैव, व्हेन यू टेक अ मनी फ्रॉम समबडी, ही हैज़ गिवन यू फॉर दैट समथिंग टू बी डन. तो वो पर्पस आपको कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये पर्पस में हम लोग को ना जो हर्डल्स आ रहे हैं, राइट फ्रॉम द लाइक एक टेंडरिंग सिस्टम है. आज आप बोलो पीएमसी को अपॉइंट किया है. आज एक पीएमसी कौन है? जो रोड मतलब वो जो रिपेयरिंग का काम कर रहे थे या जिसका कोई ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है. सो फर्स्ट तो यहाँ पे अरेस्ट होना चाहिए कि दे शुड बी लाइक पीएमसी शुड बी लाइक अप्रूव्ड बाय द एमसीजीएम और सम गवर्नमेंट बॉडी. बिकॉज जो टेंडर उन लोग फ्लोट कर रहे हैं उनको ही उनका सब्जेक्ट नहीं मालूम है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द रीडेवलपमेंट, जैसा यू विल एग्री विद अस कि क्यों रीडेवलपमेंट अटक जाता है, क्यों रीडेवलपमेंट प्रोसेस स्लो चलता है, बिकॉज देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन द टेंडर इटसेल्फ. अच्छा, पीएमसी भी सोसाइटी को प्रॉपर गाइड नहीं करते हैं, बोलते नहीं अपन एक बार डालेंगे, डेवलपर अपने आप से करेगा, ये करेगा, ऐसा नहीं होता. दे हैव टू डू सम वर्क बिफोर दे फ्लोट अ टेंडर. तो एक गाइडलाइंस होना चाहिए सोसाइटी के लिए, बिफोर ऑल्सो इवन यू फ्लोट अ टेंडर, दिस आर द गाइडलाइंस, अदरवाइज यू कांट फ्लोट अ टेंडर. सर आज एक टेंडर हम लोग लेते 50-50 हज़ार का, महीने का 20 टेंडर लेते हैं, उसमें फिर आप EMD डालो, मतलब 1-2 करोड़ ऐसे हमारे
सिस्टम में रहते हैं जो इसके लिए रहते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज हियर वेयर द पीएमसी इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच दे शुड बी हैव अ लाइसेंस पीएमसी, अदरवाइज दे कांट फ्लोट अ टेंडर. सेकेंड थिंग, चलो एक बार टेंडर फ्लोट हो गया, अभी सोसाइटी पे आ जाते हैं. सर आज है ना, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, यू गिव द रेटिंग्स फॉर रेस्टोरेंट लाइक इट्स अ 5 स्टार रेटिंग. आप कुछ परचेज करते हो ना तो उसका रेटिंग मिलता है. अभी जैसे जी नॉवेल्टी बोल रहे कि मैं 15 साल में इतना मैंने हमने काम कर दिया है, उनके पास कोई रेटिंग नहीं है. अथर्व के पास रेटिंग नहीं है. जैसे उन्होंने बताया कि अथर्व कुछ अच्छा काम कर रहा है, उसको पैशनेटली काम कर रहा है, मगर उसको कोई रेटिंग्स नहीं है. तो ऑल गुड बिल्डर्स आर कंपेयर विथ सम टॉम डिक हैरी. जब आप एक टेंडर फ्लोट कर रहे हो, टेंडर कोई कोट कर रहा है, तो हर एक को एक तरीके से देखा जाता है. सो देयर शुड बी सम रेटिंग सिस्टम फ्रॉम द गवर्नमेंट कि भाई हाँ ये डेवलपर को इतना रेटिंग्स मिला है. सो देयर शुड बी सम पैरामीटर्स. जैसे हम अथर्व वी प्राउडली से दैट विद इन विले पार्ले वी हैव डिलीवर्ड 750 होम्स विदाउट एनी लिटिगेशन, जीरो लिटिगेशन. आज 10 लाख फुट काम कर दिया है और 5 लाख फुट काम कर रहे हैं. पर हमारे पास ऐसा, हमको लोगों को बताना पड़ता है. वाई शुड वी से दिस? देयर शुड बी सम रेटिंग सिस्टम. Let me interrupt you. I have seen the industry part also, not only the building industry, but the engineering industry also. So I don't think there is any rating system anywhere for any supplier. So that should be, there should be. Sir, आज अब That is the very far-fetched future you are. no, sir. Today, even if you go to any, पॉईंट की तुम्ही गव्हर्नमेंटमध्ये जर तुमचे टेंडरर्स असतात त्याच्यानं तुम्हाला रेटिंग असतात कॉन्ट्रॅक्टर्सचे एक्सटर्नल वाय क्लास ए क्लास क्लास ए क्लास बी तो नो बट नाही गव्हर्नमेंट नाही हो पण एक बीएमसी कडे जर no, I'll say how the rating can be done. अगर आपका रेरा में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि आपने टाइम पे डिलीवर किया प्रोजेक्ट, देयर इज जीरो लिटिगेशंस, ओके, व्हाट काइंड ऑफ स्केल ऑफ प्रोजेक्ट्स यू डन, गिव द रेटिंग्स अकॉर्डिंगली. तिथेच होतं ना की सर आज आज गव्हर्नमेंटची लायन्स करणारी आपली एक बॉडी आहे. सो ॲज अ डेव्हलपर आय एम लायझनिंग विथ द government bodies. I have made all the payments on time. I have delivered the project within the RERA time frame. There is no litigation from the society or the buyers or the contractors. Then obviously I stand a better chance than somebody who's just come in आणि तो म्हणतो की मी एखाद्या ठिकाणी 40% ऑफर दिली, तो म्हणतो मी 50% देतो. आणि then the society gets biased to that 50% without understanding these track records. कारण बाकीच्या गोष्टी तर तुमच्या म्हणून दॅट इज समथिंग. आणि मी पीएमसीचा आधी एक पॉईंट घेतला जो सर पण म्हणाले, पीएमसी मध्ये ना तुमच्याकडे त्या पीएमसीला त्या लोकल डायनामिक्स माहिती पाहिजेत. कारण मुंबई रिडेव्हलपमेंट इज मायक्रो मार्केट स्पेसिफिक, राईट. मी आज परवाच एक केस होती, तो मला म्हणाला की मुलुंडमध्ये मी ॲव्हरेज रेट 30,000 रुपये प्लस घेतो. पीएमसी म्हणजे वेस्टर्न साईडचा होता. म्हटलं सर तुम्ही 30,000 मध्ये फ्लॅट मला विकून दाखवा. जर माझा रेट तुमच्यापेक्षा 4,000 रुपये कमी असणार आहे तर देर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ डिफरन्स इन माय ऑफर अँड व्हॉट यू आर गोइंग टू टेल द सोसायटी. आणि तुम्ही सोसायटीला एक काहीतरी पिक्चर पेंट करता जे कधी फिजिबलच नसतं. दॅट इज वाय मोस्ट रिडेव्हलपमेंट्स हॅव बीन स्टक. म्हणजे मी आज एक छोटासा मायक्रो मार्केट मुलुंडचं तुम्हाला सांगतो. म्हणजे सिमिलर मुलुंडमध्ये 9, 10 वर्ष सोसायटी फक्त रिडेव्हलपमेंट प्रोसेसमध्येच आहेत. नाही प्रोसेस म्हणजे अजून डेव्हलपरच अपॉइंट नाही झाला. अपॉइंट होऊन कॅन्सल कारण तिथपर्यंत पोहोचतच नाही. तिथेच येऊन कारण काय होतं की लोकांना आपलं हो आज मला हे ऑफर मिळेल, उद्या येऊन सांगतं नाही अजून दुसरी ऑफर मिळेल. एंड वन मोर थिंग, सोसाइटी हमको अपॉइंट करती है डीए करने के लिए, पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए, प्लान सबमिशंस के लिए. दे विल टेक अराउंड 2 years, 3 years, their own sweet time. But there's a clause in the DA that once you start the work, you have to done within 13 months, 15 months. मतलब उनके लिए कोई टाइम लिमिट्स नहीं है. मतलब हमारा मार्केट अगर TDR आज ये रेट है, 2 साल का TDR का रेट चेंज हो सकता है, पॉलिसी चेंज हो सकता है. बट देन अगेन दे विल से देर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू देयर टाइम, बट फॉर अस देर इज अ रिस्ट्रिक्शन टू टाइम. देर इज नो पेनल्टी टू द सोसाइटीज. सो देर इज नो लॉज लाइक दैट विच इज क्लैरिटी. आई मीन कोई क्लैरिटी नहीं है चीज़ में. थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट लाइक हम लोग आईओडी लेते हैं. ओके, नाउ दिस अ क्लासिक एग्जांपल. बॉम्बे इज फुल ऑफ रीडेवलपमेंट. एवरीबडी विल एग्री दैट जैसे पार्ला का मैं बात, वी आर इन विले पार्ले, सो आई टॉक अबाउट मच अबाउट विले पार्ले. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, एग्जिस्टिंग मेंबर्स परचेज एक्स्ट्रा एरिया.
That too at a discounted rate. मतलब they are full capable, like around 300-400 square feet. मतलब आज उनका अगर 500 फुट का घर है, उनको 600 फुट मिला, they will go for 1,000 square feet. 400 square feet they are asking from us, right? RERA says that you can register the project for RERA after CC. मेरा IOD पे पूरा पैसा लग जाता है. IOD पे मेरा पूरा पैसा लग जाता है, मैं CC लेके आता हूँ. CC मतलब मेरे को बिल्डिंग डिमोलिश करना है. CC लेके फिर मैं RERA के लिए रजिस्टर करूँ. Till that I can't ask the money from that person. ओके अब सोसाइटी में हमारा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि लोग बोलते अभी मेरे पास पैसा नहीं है, यू टेक द इंटरेस्ट, आई गिव यू आफ्टरवर्ड्स. सो आई हैव अप्रूव्ड द प्लान्स अकॉर्डिंग टू योर विश, गिविंग इट एट अ डिस्काउंटेड रेट. नाउ आई कांट डू एनीथिंग. एंड ये चीज़ हम लोग ने रेरा को भी नोटिफाई किया था कि सर एटलीस्ट सम ने फुल अमाउंट फ्रॉम आवर साइड, बट वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम द मेंबर बिकॉज रेरा सेज यू कैन टेक द मनी फ्रॉम द मेंबर. सो दिस इज समथिंग फुलिशनेस विच वी हैव नोटिफाई. वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मेंबर को भी बोलना चाहिए कि यू हैव टू पे द मनी. इफ यू आर इंक्लाइंड टू परचेज एक्स्ट्रा एरिया, देन यू शुड गिव सम मनी टू द डेवलपर. Solution to it. So there is a solution to it. Actually, the society members needs to deposit the certain amount to the committee itself. At the right time, it has to be disbursed to the developer so that the plans which are being proposed and the same shall be approved on the same parameters. Second, it is always said by various courts, including High Court and Supreme Court, choose your developer wisely. The process of the redevelopment should be in such a way that the Just only one point to this, that after doing 70% of amount, like pumping into the system for IOD and everything, True. I can't be at the mercy of the committee. And how the committee operates, we all know. See, there are good committees, true, there are bad committees. So we can't be at the mercy of the committee. So what we used to do it. No, No, sir. no, no, I'll no, tell you no. how it works. No, I'll give you clarity on this. So generally, there might be an escrow account which can be done with the committee as well as the developer. So the amount can be deposited in such a way. This second, this is just a options. What I'll give you a logical answer to this. See, if as a member you are buying in 100 square feet or 200 square feet from me, and so and so rated at a discounted rate, okay. So when I ask you to, it is just for a partial payment. What we can do it. Yeah. Yes. So a token of amount can be deposited to his interest for getting that approvals can be done. जो members को additional area खरीदना रहेगा, that also can be addressed, and simultaneously जो developer का costing लगता रहेगा, the risk factor, if some members are not in a position to pay further, तो वो एक risk factor can be minimized in such a way. Hence, it is more advisable, choose your developer wisely. जो सर बता रहे थे, the parameters should be there, the very clearance before opening a tender. जो टेंडर प्रोसेस के हिसाब से भाई एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, the completion certificate होना चाहिए, the IOD and OC के कॉपीज टू बी सबमिटेड, इतने टाइम फ्रेम में उसने डिलीवर किया है, all the backups should be submitted. The process यानी एक फाइनेंशियल टेंडर्स रहता है एंड एक कमर्शियल टेंडर रहता है. The financial tender, that is यानी the commercial part है वो, बट जो कमर्शियल टेंडर जहाँ पे डेवलपर सबमिट करता है सब डॉक्यूमेंट्स, first that needs to be scrutinized properly and thereafter the opening of the tender should be done for financials, यानी क्या ऑफर दिया जाता है. तो जो पैरामीटर्स अगर पहले से ही क्लैरिफाई अगर हो गए रहेंगे, so there is a probability where the developer would be, whichever developer would be into place, वो probability बहुत अच्छा रहेगा to have a very smooth decision for appointment of a developer. Second point, what yes, सब developers है यहाँ पे, the process of selection of the developer starts with the 79A process, and of course it is a very hefty amount which things needs to be addressed. So जो चालू जहाँ से हो रहा है, it is at the very ground level work where the risk factor is always there, क्योंकि एक LOI जो जब भी एक developer को society दे रही है, it is very riskier thing where the DA is not yet been settled, the plans are not yet been settled by the society and the developer, and the hefty amount and a risk factor is always there where the developer can be terminated at any point of time before the signing of the DA as well.
हमने देखा रहेगा तो वो एक सोसाइटी में 4-4, 5-5 डेवलपर्स आके चले गए हैं, बट द 79A प्रोसेस इज ऑलरेडी देयर एंड विच इज नॉट बाइंडिंग ऑन एनीवन, विच इज वेरी वेरी, यानी द सोसाइटी ने भी बहुत मेहनत किया रहेगा एक डेवलपर को सिलेक्शन करने के लिए, एक डेवलपर्स ने भी बहुत सारे एफर्ट्स डाले रहेंगे टू गेट देमसेल्फ सिलेक्टेड. सो एक यहाँ पे एक वेरी ग्रे एरिया आ जाता है वेयर डेवलपर इज एट ए रिस्क फैक्टर एज वेल एज द सोसाइटी एंड देयर कमिटी मेंबर्स इज एट टाइम वाइज बात कर रहा हूँ मैं. एंड सेकेंड, वेयर जहाँ पे लेआउट के इश्यूज है, दी FSI कंजम्पशन के इशू है, दी PMC शुड बी वेरी वोकल इनफ. जो 30,000 का प्राइस ही नहीं है, जहाँ पे 22-23 हज़ार का प्राइस रहेगा. सो दी मेंबर्स आर ऑल्सो टू बी, यानी दे हैव टू बी वेरी ओपन एंडेड के एक 2,000 स्क्वायर मीटर का प्राइस विथ एम्यूनिटीज, उसका प्राइस एक अलग रहेगा, एक 500 मीटर का प्राइस अलग रहेगा बिकॉज दी एम्यूनिटीज आर नॉट येट एड्रेस्ड, और एक 8,000 स्क्वायर मीटर का प्रोजेक्ट रहेगा, वहाँ पे प्राइसिंग अलग रहेगा बिकॉज दी एम्यूनिटीज प्ले वेरी क्रूशियल रोल फॉर ए रीडेवलपमेंट प्रोसेस. यानी रीडेवलपमेंट इज ऑफकोर्स के जहाँ पे अपग्रेडेशन कर रहे हैं हम सोसाइटी मेंबर्स. So that the parameter of comparison of the price and the various aspects needs to be considered properly by the PMC as well as the society to recheck it in such a way. Yeah. नहीं तो ये बात तो बराबर है. आई थिंक द टेंडर डॉक्यूमेंट ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल बिकॉज आई रिमेंबर आवर सोसाइटी वॉज गोइंग इन टू रीडेवलपमेंट. वी हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर अ वेरी ह्यूज डॉक्यूमेंट, टेंडर डॉक्यूमेंट, and that the guideline for all builder, PMC, whatever, and then not to deviate from the tender document was our decision, unanimous decision, and then the process went on very smooth. That's the way. I think RERA has also done lot of good things to this industry. तुम्हाला पहिल्यांदा एक सांगायचं होतं, तुम्ही बोला. त्याच्यावरच यायचं होतं. मगाशी हिरानीजींनी जे सांगितलं की कस्टमर पेमेंट आपल्याला करत नाही, म्हणजे तो मेंबर पेमेंट करत नाही आपल्याला, तर रेराने त्याला कस्टमर म्हणून ट्रीट केलं पाहिजे इन्स्टेड ऑफ को प्रमोटर. तुम्ही जो लँड ओनर म्हणून तुम्ही जेव्हा रिडेव्हलपमेंटला जाता फॉर हां, मग बरोबर आहे वेन यू आर टेकिंग पर्चेसिंग एक्सटेरियर फ्रॉम अस, बरोबर, तर त्याला कस्टमरचे नियम लागले पाहिजेत. म्हणजे हो पण लागतात, पण त्याला रेरामध्ये त्याला थोडं सेफगार्ड जे केलेलं आहे मेंबर म्हणून, तर त्याच्याऐवजी सगळे कस्टमरचे नियम लागले पाहिजेत आणि त्याच्यातून पैसे आम्हाला जे जनरेट झाले पाहिजे एक्सटेरियरचे, तर त्याला सगळे ते रेराचेच नियम लागले पाहिजे आणि त्याला कस्टमरची ट्रीटमेंट दिली पाहिजे. दुसरा एक विषय मला अजून बोलायचा होता. तुम्ही जो पेन टेररिझमचा जो हे सांगितलात, आता पाठक साहेबांना माहिती असेल 8 दिवसापूर्वी PMRDAचा डेव्हलपमेंट प्लॅन कॅन्सल केला आहे. 8 वर्षापासून तो प्रपोज डेव्हलपमेंट प्लॅन होता आणि त्याला प्राधिकरण झोनिंग दाखलेसुद्धा डेव्हलपर लोकांना त्याच्याप्रमाणे देत होतं आणि त्याच्याप्रमाणे अनेक ट्रान्झॅक्शन्स झालेली आहे, डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट रजिस्टर झालेले आहेत अँड वन फाईन मॉर्निंग डेव्हलपमेंट प्लॅन कॅन्सल झालेला आहे. पुण्याचा PMRDAचा MMRDA जसा आहे तो बृहन पुणे, तर तो कॅन्सल केला. तो एवढा मोठा केओस आहे आता त्या ह्याच्यामध्ये, तो याचा म्हणजे तो भयानक आहे. आपण किती म्हटलं तरी पॉलिटिकल सिस्टीम जी आहे ती या सगळ्या इंडस्ट्रीवर हावी होतेच नाही. तो म्हणजे So it's not only political system. This is an easy way to say कि political system. We all are educated. Sir, आज आप एक कपड़ा लेते हो ना तो आप 4 चीज़ देखते हो, उसका टेक्सचर देखते हो, तो while you are purchasing a home, while you are doing, no, you have to put a pressure to the government. These are the points to be raised from the people. See, जहाँ तक आप लोग नहीं raise करोगे ना, see, when we develop, government asks for the undertakings. ब्ला 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 अंडरटेकिंग्स. आज कोई BMC से कोई सोसाइटी से अंडरटेकिंग क्यों नहीं लेता कि अगर मैं रीडेवलपमेंट करूँगा तो यू अश्योर मी अबाउट द वाटर, यू अश्योर मी अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज द वर्क ऑफ द BMC. यू टेक द अंडरटेकिंग फ्रॉम द BMC. वाई दोज क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड? Sir, but do you think so? But do you think so? They are giving any undertaking like that? See, today the kind of FSI they are giving, parking is going to be a problem, water is going to be a problem. Everybody knows that. मतलब एक बच्चे को भी मालूम है. But still we, तो कोई क्यों नहीं? See, इसमें से थोड़ा आर्किटेक्ट्स का भी क्या है, मतलब I'll say, due respect to all the architects, they should take a stand for this, that we can't have haphazardly FSI
See, in Singapore, they have restricted the FSI consumption because they said because हमारा roads ही उतना नहीं कि उसको support कर पाएगा. We can't do much further developments. See, आज पार्ला में सर, I'm talking about पार्ला में हर एक लेन में 3 बिल्डिंग बन रहे हैं. कितने गार्डन नए बने, कितने हॉस्पिटल नए बने. सर यहाँ हॉस्पिटल अंधेरी के बाद बोरीवली तक कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है. So if there is an emergency, people have to travel from Borivali, which will take around 1.5 or 2 hours to reach either Bandra. So nobody is talking about that kind of planning. So as an, sir, just due respect to again architects, that they are the father and they have done a lot of efforts. But rightly said, because of the politics or the officers, IS officers, this is not getting implemented. But we have to somewhere, push them for these things. So, on this point, the basic item is all the development plan is prepared by the corporation and the state government. What is lacking very badly is that we do not have urban planners. Yes. And urban planners are the base of the industry. They have to be placed in proper government positions to plan the entire city. When you are planning for the entire city as in 2000, for the year up to 2034, we have to take into consideration सगळ्याच गोष्टी घ्यायला लागतात. एक एरिया असेल त्याच्यासाठी किती गार्डन पाहिजेत, किती स्कूल्स पाहिजेत, किती हॉस्पिटल्स पाहिजेत, किती क्रेमेटोरियम पाहिजेत, कॉलेजेसची जागा पाहिजे, प्लेग्राऊंडची जागा पाहिजे, रिक्रिएशन ग्राउंडची जागा पाहिजे. ऑल दीज थिंग्स हॅव टू बी टेकन इन टू प्लेस अँड पुट इन टू प्लेस. आता पूर्वीच्या ह्याच्यामध्ये काय झालेलं, पूर्वीच्या 1981चं जर का DP बघितला तर त्याच्यात माझ्या प्लॉटवर RG आहे किंवा प्लेग्राऊंड आहे. नाउ आय नो दॅट दिस थिंग कॅन नेवर बी डेव्हलप. द बेस्ट थिंग इज टू पुट स्लम ऑन दॅट. सो इफ यू सी एनी प्लॉट्स in Mumbai which are in development plan of 81 of this, which are shown as playgrounds, which are shown as reservations, you will find them all full of slums. That is the bad part of it, and nobody is able to control it. आज जर का दुसरी गोष्ट बघितली तुम्ही तर ओव्हरऑल construction quality has improved by leaps and bounds. What I may be offering, or what he may be offering, or others may be offering, for that RCC ला त्यांना स्ट्रक्चरला त्यांनी ग्रेडेशन दिलेलं आहे. सेम क्वांटिटी IS कोड प्रमाणेच बांधायला पाहिजे, स्टील तेवढं तेच वापरलं पाहिजे, कॉन्क्रीट तसंच वापरलं पाहिजे. सो बेसिक RCC स्ट्रक्चर इज इन प्लेस. So roughly around 60% of the work which I am doing will be the same that any other builder will be doing. Then there comes the second part of it, the other work, say brick work, external plaster, internal plaster, electrification, plumbing. All these things are going to take from 60 to 85 to 90%. What is the difference between his building and my building will be in the last 8 to 10%. will be in the amenities that he is providing, the type of tiles he is providing. Now, what he rightly pointed out is, आजची जी टेंडर निघाली जातात किंवा काढलेली जातात, ते कट पेस्ट मॉडेलमध्ये टेंडर काढलेली जातात खूपशी. आय एम नॉट सेइंग एव्हरी वन. यू वॉन्ट टाईल्स, यू विल से की कजारियाच्या टाईल्स लावून टाका. आय डोंट से कजारिया, बट A, B और C कॅटेगरी टाईल्स लावून टाका. सो 2 फूट बाय 2 फूटच्या टाईल्स तुम्ही लावून टाका. आज 4 फूट बाय 2 फूटच्या झाल्या, 6 फुटाच्या 2 फूटच्या झाल्या. दर आर डिफरंट टाईप्स. जागुआरची फिटिंग झाली तर जागुआरच्या फिटिंगच्या बरोबर आज त्याच्याबरोबरच्या क्वालिटीचे डिफरंट क्वालिटीज ऑफ मटेरियल्स हॅव कम, और हाय क्वालिटी मटेरियल्स हॅव कम. सो दॅट PMC शुड लुक इन टू इट अँड प्रिपेअर अ टेंडर व्हेरी मेथॉडिकली. दॅट टेंडर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. तिसरं, as just a gentleman said की you select your builder very properly. त्याचे क्रेडेन्शियल्स बघा, त्याचे फायनान्शियल्स बघा, त्यांनी किती बिल्डिंग पुऱ्या केल्यात बघा, तिथे किती वेळात पुऱ्या केलेल्या आहेत बघा. सो त्याची क्वालिटी बघा. इफ दॅट इज अप टू द मार्क, देन ओनली यू अपॉइंट सच अ बिल्डर. आज वॉट एव्हर इज हॅपनिंग इन द सोसायटी इज द redevelopment of any society is based on only 3 criteria.
additional area, corpus and rent. Out of that, rent, I think is an issue which should not be discussed at all, because जर का पार्ल्यामध्ये 100 रुपये रेंट चालू असेल तर मी 90 रुपये देत असेल तर तुम्ही शिफ्ट होऊ शकणार नाही. सो आय हॅव टू गिव्ह द सेम रेंट. सो व्हॉट इज द बेसिक क्रायटेरिया इज ॲडिशनल एरिया अँड corpus. Here also, if the PMC is very rigid, very rather practical, you will understand कि what is the amount of corpus and this additional area can be given to the society per se. Now, there are 5 builders in the line. Then I am going to get, let us say, hypothetically, I am giving some 30% extra. Somebody is giving, the entire range will be, he will give 31%, he will give 33%, he will give 34%. Somebody will get 28%. But that entire range is working between 28% to 33% or 34% per se. It can't go beyond that. But what is happening? A builder is offering 40%. Then you look into that, why this gentleman is offering 40% vis-a-vis everybody offering between 28 and 33. But society मध्ये आज immediately असा impact येतो, तो 40% देतो पहिला त्याला. तुम्ही मॅच करा. Then 40%ला तुम्ही the other person, I am at 34. He is giving 44. Why don't you raise it to, I may be a good builder, they agree to that. So match it to that 40%. Now that matching is something that is greed, which society members should, I'll just, so that is something that the man has to understand, a person has to understand. If he is giving 40%, कोणी इथे धर्मादाय खाता उघडलेलं नाही आहे. मी फ्री काम करणार नाही आहे, मला पैसे मिळणार तरच मी काम करणार आहे. सो इफ आय एम गोइंग टू वर्क ऑन दॅट बेसिस, I am cutting my profits or going below the profit. So if I am going below the profit, that building is not going to be completed and you might be in deep problems. Another problem that was being discussed some time back was additional area. You want additional area at concessional rate. So when you are into PMC जे टेंडर येतं त्याच्यामध्ये you are anticipating that you will get an additional area of 30% additional. Now, that 30% is all, instead of that 30%, once I give it to you as 30%, before DA, it is again being negotiated. Then it goes down to 2% दिलं तर काय फरक पडतो, 3% दिलं तर काय फरक पडतो. So ultimately settled at 32%. So that builder is already stretched to 32%. Then again you say, now 10% concession in rates. Okay. How much? If I want to sell it at a lesser price, there has to be a limit. I can give you 100 square feet more, total entire society में 3,000 फूट extra, 4,000 फूट extra देऊ शकेन. त्याच्या पुढे मी देणार नाही. That builder also has to put very firmly. Up to that point I can. Okay, now when it comes to that, you give me 10 माणसं आहेत, 10 माणसाला 100 फूट एरिया पाहिजे. 100 फूट एरिया दिली. त्याच्यानंतर मी त्याच्याप्रमाणे प्लान करतो. I come to, then out of just before the DA, then 4 persons say, I am dropping out. Now, 4 persons when they say I am dropping out, my entire plan changes. I go back to the drawing board, I put the plan, and then 3 persons say I want to join in. Now what? So that is one. Like. Secondly, when you are talking about payments are not being done and it is as per RERA and all that stuff, okay, fine. It has to be as per RERA. When I am allotting you a flat as permanent alternative accommodation, I have to make an agreement before commencement certificate and give it to you that I have to make this permanent alternative because I am giving you so many square feet of area. Now, that 30% of area I have already given you in permanent alternative accommodation. Now that 100 square feet which you have bought extra, it is not in permanent alternative accommodation. It is a separate agreement per se. Now, when I complete my building, that you don't have the money to pay for that 100 square feet. Now what do I do? As per permanent alternative accommodation, at the time of completion, I have to hand you over the flat.
What about the 100 square feet which I don't get my payment? Then where does the RERA lie? Now this has to be bought on a common platform, that if it is a permanent alternative accommodation, I have to give that. But above that 100 square feet, if you are not ready to pay to me those 100 for that 100 square feet, it should be deducted from your corpus, or society should be responsible. When I ask the society that it is your responsibility to take care of these additional areas, they say no, that is not, that is between you and the member. That is where the entire True. So, adding to the sir's point, true, sir. Sure. Done, sir. Coming to the same point, greed is the best point जो सर ने बताया था अभी. We have left, सर 5 स्क्वायर फीट दे दीजिए यूनामसली आपको सबको वोट यानी मीटिंग में ही. सो जहाँ पे स्टैंड लेना है वो स्टैंड लेना पड़ेगा सबको, सब डेवलपर्स को. एंड वी हैव वेरी क्लियरली मेंशन कि भाई नहीं, हम लोग नहीं दे सकते हैं. द टेंडर प्रोसेस कंटिन्यूज टू से टाइम फ्रेम कभी भी टेंडर प्रोसेस का नहीं रहता है. सो 2 साल तक टेंडर प्रोसेस चालू रहता है. द रेडी रेकनर्स चेंज हो जाते हैं, द अरिथमेटिक्स गेट्स चेंज. हम लोग साइमल्टेनियसली वो भी मेंशन कर देते भाई ये हमारा वैलिडिटी रहेगा. एंड साइमल्टेनियसली हम लोग वी हैव ऑलरेडी टेंडर्स यानी जहाँ पे हम लोग ने बैकआउट कर लिया है, बिकॉज जो टाइम फ्रेम में अगर दी सोसाइटी इज़ नॉट इन ए पोजीशन टू टेक द डिसीजन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एड्रेस इट. यानी एंड ऑफ द डे अगर कोई डेवलपर नहीं कमाना है, जो राइटली पॉइंट किया है सर ने, अगर डेवलपर कमाएगा नहीं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एड्रेस वॉट इज़ बिन कमिटेड बाई द डेवलपर एट वेरियस स्टेजेस. Hence, sub each and every parties, यानी whether the developers are there into place or the societies are there into place, एक जो threshold जो thin line रहता है, वो thin line को किसको भी cross नहीं करना चाहिए for over committing it or over asking it to the developer, so that a win-win situation and the final product can be done and delivered as per commitments. Thank you. Now it is almost 1 o'clock and we are coming to the end of this discussion. Very beautiful discussion. But I have 1 or 2 more last few questions for everybody. When we go abroad, say to Dubai or say Singapore or cities like that, we see very different structures, different shape of buildings and very innovative structures of buildings. You see skylines of Dubai, skylines in Singapore and all. Why don't we see that all that in Mumbai? We see only height. We don't see exotic structures. No. I'm asking everybody. Why don't see such exotic structures in India or in Mumbai? Delhi छोड़ दो, लेकिन India, Mumbai आप बोलो, Pune. Sir, previously when I go to previously Singapore, I am zapped. When I go to Dubai, I am zapped. But मुंबई में सब एक जैसा क्या है भाई? सर प्रीवियसली आप कुछ देखोगे ना, करो। पहले कॉन्सेप्ट था कि बालकनी फ्री था, तो लोग बालकनी वाला बिल्डिंग बनाते थे, एलिवेशंस वाला बनाते थे. ठीक है, जैसे जैसे स्ट्रिक्टनेस आती गई, प्रॉब्लम्स आते गए और लोगों के ये जो प्राइसेस हाई होते गए, तो प्राइसेस हाई होने के हिसाब से सारा चीज़ कवर्ड अप हो गया. अब कॉस्ट कटिंग और दूसरा कि बहुत सारे अपने ऐसे नॉर्म्स है जिसमें रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है. जहाँ पे अगर बिल्डिंग आप बोलते हो कि थोड़ा आर्टिस्ट वाला कुछ बिल्डिंग बनाना है, तो प्लान पास ही नहीं होता है. गवर्नमेंट के इतने सारे उसमें रिस्ट्रिक्शंस आते हैं कि आपको ये नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो, इधर ये छोड़ो वो छोड़ो. तो कॉस्ट के अंदर बैठता ही नहीं. या फ्री हैंडेड आप डेवलपर्स को दे दो, क्या फ्री हैंडेड बिल्डिंग बनाओ और आपको ओपन प्लॉट में हमने दे दिया है, सोसाइटी ऑल्सो रेडी फॉर दिस, और गव्हर्नमेंट सपोर्ट करे, तो आप देखो कितना अच्छा बिल्डिंग बनता है. सर पण एक ऍड करायला आता आय थिंक बीएमसीनी एक नवीन रूलही काढला आहे की सी आज तुमचं ना रिडेव्हलपमेंटमध्ये तुम्हाला एक्झॉटिक बिल्डिंग नाही मिळणार, कारण तुम्हाला प्रत्येक सोसायटी मेंबरचा एरिया बसवत तुम्ही फ्लॅट बनवत जाता. त्यामुळे टू क्रिएट अन एक्झॉटिक बिल्डिंग इज अ चॅलेंज. बट आय थिंक सर बीएमसीने आत्ता काहीतरी नवीन रूल काढला, इफ देर इज अ स्पेसिफिक आर्किटेक्ट अँड अ स्पेसिफिक बिल्डिंग, यू आर गेटिंग ॲडिशनल FSI अँड सम बेनिफिट्स टू मेक इट अन आयकॉनिक बिल्डिंग. स्पेसिफिक पीपल, दॅट्स ओके, बट कॉमन मैन को कुछ बेनिफिट नहीं ना उससे. Yeah.
सो सर मतलब आप सही बोल रहे हो कि हमको भी ऐसा लगता है कि अच्छी बिल्डिंगें बननी चाहिए एंड एट अथर्व वी ऑलवेज ट्राई फॉर दैट. हमारे डीएनए में आप अगर हमारे बिल्डिंग देखोगे ना तो वी ऑलवेज पुश अवर लिमिट्स कि अच्छा एलिवेशन दे. बट एक है ना ये जो रीडेवलपमेंट मॉडल है अक्रॉस वर्ल्ड, इट इज़ लाइक इट्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स या फिर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में होता है. मतलब यहाँ पे बॉम्बे या इंडिया में ऐसा है कि देर आर इंडिविजुअल डेवलपर्स. अदरवाइज व्हेन यू से अबाउट सिंगापुर, दुबई, इट्स अबाउट विद द गवर्नमेंट एंड देर आर कॉर्पोरेट बॉडीज हु आर डूइंग दिस रीडेवलपमेंट प्रोसेसेस. तो एक क्या होता है, एक तो एलिवेशन फसाड सेम रहता है बिकॉज इट्स लाइक acre of lands they are developing, redeveloping, so same kind of facade you see. Second thing, sir, the way our culture is, the way their culture is very different. If you go to Dubai and see their kitchen, na, they don't have any windows. हमारे अगर एक किचन दो विदाउट विंडो विद एग्जॉस्ट सिस्टम, वो माली नहीं बिकेगा. So the kind of culture what we want, the light, ventilations, design, cultures. So accordingly, this, see, I'll tell you, all Dubai has a all facade. You look, that looks because of facade system. अगर वो facade में centralized AC डालोगे ना तो हो सकता है. So there is like I think I just saw this building, blue. This they have complete facade system in Worli. Now people are having a problem because they want windows. In residence, they are not accepting that thing, which it's very common in Dubai. So there are many things like that. Because of that, we are not able to do that. And rightly said by Mr. Gentleman that government हमको कुछ option ही नहीं दे रही है elevations के लिए. They have their restrictions. Then how can we do that? सर आप यहाँ से बाहर चले जाओ, गुजरात चले जाओ, अहमदाबाद, बड़ौदा, बिल्डिंग्स देखो, बंगलोज देखो, कितने स्टाइलिस्ट और कितना चीप कॉस्ट में. आपको लगता है यहाँ आके रहना चाहिए. वही आप बॉम्बे में बना सकते हो, हमको कॉस्टिंग सेम आएगा. खाली थोड़ा सा फ्री हैंडेड छोड़ो. जैसे हमने बोला कि गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कैसे कर सकते हो. हमको कुछ इलीगल नहीं करना है, बट आप प्रॉपर सिस्टमेटिक से थोड़ा सब कुछ छूट दो. अच्छे से अच्छी बिल्डिंग बनेगी और लोगों को बहुत अच्छा एलिवेशंस मिलेगा और प्लानिंग भी बहुत अच्छा होगा. जैसे अभी एक पीएमसी के ऊपर अपना डिस्कशन चल रहा था, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ. 2010 में एक सोसाइटी हमारे पास आई थी. उस टाइम पे हमने उनको 50% ऑफर किया था, ठीक है. और किसी और ने, उनके पीएमसी ने उनको रोजी पिक्चर दिखा दिया. रोजी पिक्चर कितना था? 52%, 2% मोर, ठीक है. डिसाइड हो गया, जी को आउट करो, 52 वाले को दे दो. दे दिया. टुडे, आज की डेट तक वो बिल्डिंग नहीं बनी है. उसके बाद हमारे 10 प्रोजेक्ट बन के ओसी आ गई, लोग रहने चले गए. उस बिल्डिंग, आज तक वो बिल्डिंग को डेवलपमेंट नहीं हुआ है. स्ट्रिक्टली वो 2%, उसको आज इतना भारी पड़ा है. नया 3 डेवलपर आ गया, आने के बाद उसको अभी 35% में खड़ा है. तो उसने क्या बेनिफिट लिया? तो लोगों को भी ये समझना है कि भाई परसेंटेज 2%, 3% के ऊपर में, और पीएमसी पे आप रिलाई करो, बट एक लिमिट तक करो. उसके बाद में अगर पीएमसी के साथ आप जाते हो, पीएमसी 2 टाइप का रोल करता है. वही पीएमसी, अगर उसको मैं अपॉइंट करता हूं तो वो मेरे हिसाब से रिपोर्ट बनाता है. अगर सोसाइटी अपॉइंट करती है तो सोसाइटी के हिसाब से रिपोर्ट बनाता है. वो होना ही नहीं चाहिए. उसका काम है एक ही रिपोर्ट बनाना, जिसको दोनों जन फॉलो करे. तो सिस्टमेटिक होगा और प्रॉपर होगा और आप लोग भी कभी फंसोगे नहीं. आज वो 52% वाली सोसाइटी इतना रो रही है और सबको पता है. वो पार्ला के सभी लोगों को पता है वो सोसाइटी. मैं नाम नहीं बोलूंगा, बट सबको पता है. ललित जी को तो अच्छे से पता है. और एकदम अच्छा डेवलपर के पास था जॉब. ऐसा भी नहीं है, कोई भी रीजन से हुआ. आज बिल्डिंग तो नहीं बनी ना, लोग तो परेशान है ना. आज 10-12 साल किसको बोलते हो आप? प्राइम प्रॉपर्टी अगर आपकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, आपके आजू बाजू में सब प्राइस में बिक रहे, 60,000 से प्राइस में माल बिका है अगल बगल में, आपका प्रोजेक्ट बन ही नहीं रहा है. तो इस पे ऊपर बहुत सब मेंबर्स को और सोसाइटीज को बहुत देखना है. हाँ, डेवलपर को भी एक, हम सबको, सब हमारे फ्रेंड्स को, हम भी कहीं किसी के साथ कंपटीशन नहीं करें. हमने अभी 2 सोसाइटी छोड़ दी. 2-3%, 4% या 5% के लिए 2 सोसाइटी हमने छोड़ दी. भाई ये इससे हम ज़्यादा ट्रेस नहीं कर सकते. आपको अगर कोई दूसरा डेवलपर देता है, आप चले जाओ. हमने अपना बैकआउट कर लिया. बट वो अपने में भी कंपटीशन ऐसा भी नहीं करना है कि भाई चलो काम चाहिए, ले लो, हम कुछ भी ऑफर कर देते हैं.
बाद में वो उसको कवर अप करने के लिए उसी प्रोजेक्ट में से कवर अप करना है ना, घर से तो कोई डालेगा नहीं, हम भी कमाने ही आए, तो उसी में से कवर अप करेंगे फिर, तो कहीं ना कहीं वो स्टक होगा। और थोड़ा सा प्ले एरिया, थोड़ा सा इसमें इस लाइन में रखना ही पड़ता है, अनसर्टन कुछ भी एक्सपेंस आ जाता है, कुछ भी खर्चा आ जाता है, तो कवर अप होने के लिए कुछ बफर रख के चलना पड़ता है। जो हम बफर रखते हैं सोसाइटी को वो नहीं समझता है, सोसाइटी बोलती है वो भी पास ऑन कर दो, तो वो पास ऑन जिसने कर दिया उसका प्रोजेक्ट में से कुछ ना कुछ माल सामान कम मिलेगा या तो स्टक होगा। तो थोड़ा सब लोग नैरो माइंडेड मत रखो, थोड़ा ब्रॉड माइंड रखो। 2% अगर आपका भाई कमा रहा है तो कमाने दो, तो चीज़ अच्छा, प्रोजेक्ट अच्छा देगा, आपको सर्विस बेटर देगा। थैंक यू। थैंक यू लास्ट सर, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है एंड आई थैंक एवरीबडी, बट बिफोर क्लोजिंग आई वांट टू आस्क वन लास्ट क्वेश्चन। सर अभी ऐसा है कि मुंबई में स्पेशली सबर्ब्स में लॉट ऑफ रीडेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस, राइट? तो बहुत सारा, आपकी भाषा में बोलते बहुत सारा माल तैयार होने वाला है ना? तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग इस बिजनेस में है, आप पूरा कॉस्टिंग विस्टिंग सब समझता करते होंगे डेली बेसिस पे, तो अल्टीमेटली अभी ओवर द से 6 months, 1 year, 2 years डाउन द लाइन, आर द प्राइसेस गोइंग टू गो अप स्टेडी और गोइंग डाउन? व्हाट डू यू सी द शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म फ्यूचर? एवरीबडी विल आंसर। I'll start with मिस्टर देशपांडे। सर प्राइसेस क्या होगा? प्राइसेस अप जाएंगे, डाउन जाएंगे, क्या होगा प्राइसेस मुंबई में? मुंबईमध्ये प्राइसेस स्टेडी राहतील, स्टेडी रहेगी, जेवढा माझा दैट इज योर टेक। हां यस, जेवढा मला माहिती आहे त्याच्याप्रमाणे प्राइसेस इतना माल तैयार हो रहा है सबब में, इतने सब रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, स्टेडी रहेंगे? चलो सर एक एक आपका स्टेडी रहेंगे, आप क्या कहते हैं सर? सो ईरानी साहब? मार्केट अभी कैसा हो गया, मुंबई माइक्रो मार्केट हो गया है, पार्ला ईस्ट एक अलग मार्केट है, पार्ला वेस्ट अलग मार्केट है। सो मार्केट हैज बीन, यू कांट से बॉम्बे एज अ फ्लैट, जनरलाइज नहीं कर। अच्छा पार्ला में भी आप पार्ला का मतलब बोलो। नेहरू रोड से, या मैं पार्ला की बात करूंगा, अपने काम की बात है। सो फ्रॉम नेहरू रोड टू हनुमान रोड एक अलग मार्केट है, आगे जाके मार्केट अलग है। सो डेफिनेटली मार्केट इज गुड। वन थिंग, मतलब मैंने आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 25 years. Price grow, I'm telling this. I'm in this industry from last 25 years. ऊपर भी देखा है, नीचे भी देखा, सब कुछ देखा है। बट अगर अच्छा लोकेशन है, अच्छा डेवलपर है, तो उसके प्राइस कभी कम नहीं होंगे, और उसके लिए कस्टमर बेस्ड एवरी टाइम रहेंगे, रहा है और रहने वाला है। सो नॉट टू वरी, बट सब्जेक्ट टू यू आर अ गुड डेवलपर, गुड लोकेशन, गुड प्रोडक्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाकी इफ यू से एवरेज आउट, डेफिनेटली द मार्केट इज गोइंग टू बी स्टेबल, क्योंकि हम लोग की कॉस्टिंग नॉट ग्रोइंग, मतलब सॉरी नॉट ग्रोइंग, it may go for Atharva. We are seeing that, okay, we don't see from the perspective of your individual company. I am saying in general, Bombay real estate prices will go up or down. stable. Or stable. For next 2 years. You Yeah, are saying stable. Yeah. That's what my take is. Sir, stable. Nobody will agree that it will go down. It can't go down. आप हम सवाल करोगे कि स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारा तो प्रोडक्ट बन के बेचना है। बोलेंगे मार्केट डाउन जाएगा तो मेरा क्या होगा? हम बोलेंगे ही नहीं, ऑलवेज इज गोइंग अप, अच्छा ही होने वाला है, जल्दी से जल्दी बुक कर लो, आगे भाव बढ़ने वाला है। सर मुंबई रिअल इस्टेट थोडासा एक वेगळा विचार केला तर डेव्हलपरपेक्षा जास्त गव्हर्नमेंट आणि MCGM ला पण मार्केट स्टेबल किंवा ग्रोथ राहणं ही त्यांचीही गरज आहे। त्यामुळे कन्सिडर मुंबई जर बघितलं तर तुमचं मार्केट हे नेहमी स्लाइट ग्रोथ ही नेहमी दिसणार, कारण आज डेव्हलपर कम्युनिटी जी काय आपण इथे बसलोय इज प्रोबॅबली द सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्युटर टू इवन द MCGM बजेट. Right. सो त्यामुळे इफ यू कन्सिडर दॅट देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पर्सेंटेज ग्रोथ. So from my perspective, it depends upon project to project, how the project amenities and how the layout of the project would be there into place. The brands कैसे रहेंगे, उनका placement कैसा रहेगा, and holistically if we see the Mumbai real estate market, mid-size upscale दिख रहा है because these yes suburban side, so mid-size upscale दिख सकते हैं हम लोग because the price are already fixed. The cash flow is already placed in, यानी पहले से placed हो चुके हैं सब जगह पे. Now the interest और जो other parts are there into place, तो वो price stagnant या upscale देख सकते हैं. The price
is difficult to go down. Thank you. See, my Only thing is that ki already we have in the entire project madhe major chunk of money is going to the corporation and government also. So cost of construction remains the same. Government premiums remain not the same. They might go higher only because ready reckoner वाढला की premiums वाढले. The other expenses are going to be the same. So if I have put in 100 rupees for the project, so there is no way I can come down on that project cost. Maybe by slightly here or there, even if there are a lot of availabilities in the market, or it is very difficult to lower down the prices because already interest is already there. It will be steady. No, my take, I don't know. My take on this is like all other industries, this is also a cyclic industry. We have seen tremendous growth in last, say, from 2003 to 2016-17. We have seen tremendous growth. What people have purchased in lakhs, they are now selling in crores. So that growth also we have seen. The curve was very steep. But now the curve, I feel, somewhat stagnated. That is what my feeling is. Of course, it is everybody's perception and everybody's opinion. रिअल इस्टेट बघितलं ना तर तुमचा एक ग्रोथ स्पर्ट होतो, मग देर इज स्टॅबिलिटी फॉर 4-5 years, then there is growth spurt. Yes, But there is never a decline. म्हणजे Mumbai has never seen a. I hope not. Mumbai will never see a decline. I hope not. But anyway, so we really had a very interesting discussion. Thank you, everybody. Yeah. And a lot of new points. Mr. Vaidya took us through the whole journey of 50 years of this construction industry, and then what is going on today in the market in Mumbai. Then we had a perspective from Pune and Nashik also. So all in all, it was a very interesting discussion, and I thank you, all the participants, all the expert panelists, and I wish them all the good, and I wish this Grow Mahotsav will also add to their success. And thank you very much, everybody. Thank you. But before we close, we would like to pay our tribute, a small memento to everybody. RK.